কন্ট্রাক্টৰৰ দাদাগিৰি নচলিব কন্ট্রাক্টৰৰ দাদাগিৰি নচলিব লয়াৰ আসাম ৰেলৱে লেবাৰ ইউনিয়ন জিন্দাবাদ লয়াৰ আসাম ৰেলৱে লেবাৰ ইউনিয়ন জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ লয়াৰ আসাম ৰেলৱে লেবাৰ ইউনিয়ন জিন্দাবাদ কন্ট্রাক্টৰৰ দাদাগিৰি নচলিব কন্ট্রাক্টৰৰ দাদাগিৰি নচলিব ইনকলাব জিন্দাবাদ কন্ট্রাক্টৰৰ দাদাগিৰি নচলিব কন্ট্রাক্টৰৰ দাদাগিৰি নচলিব আমাৰ দাবী আমাৰ লয়াৰ আসাম ৰেলৱে লেবাৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা সংবাদ বন্ধুসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আমাৰ পিক লাইন সেই পিক লাইনত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। এই পিক লাইনৰ যিখিনি শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা আছে। এই সমস্যাখিনি হ'ল সিহঁতৰ যিখিনি প্ৰাপ্য মজুৰি মানে মাহেকীয়া যিখিনি পাব লাগে মান্থলি সেইখিনি নাপায়। সিহঁতৰ যিখিনি অধিকাৰৰ পৰা সিহঁতে বঞ্চিত হৈ আছে। সিহঁতক সময়মতে চেলাৰি দিয়া নহয়, দৰমহা দিয়া নহয়। নৱেম্বৰ মাহত কাম কৰিছে, এইটো ডিচেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখ আজি, নৱেম্বৰ মাহৰে চেলাৰি হোৱা নাই। ডিচেম্বৰ মাহৰে এই শ্ৰমিকখিনি 8-9 হাজাৰ টকা চেলাৰি পায়। এই টকাটো যদি সময়মতে নাপায় তেনেহ'লে সিহঁতৰ ফেমিলি কেনেকৈ চলিব? সেই মৰ্মে আজি আমি লয়াৰ আসাম ৰেলৱে লেবাৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আমি এডিএম ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ। এখন মেমৰি নাম দিম আৰু এই মেমৰি নামখন দি আমি আমাৰ যিখন এই পিক লাইনৰ যিটো কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে গণেশ প্ৰসাদ সিং, ইয়াক আমি আজিৰ ডেটত আপোনালোকৰ যোগেদি আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰত যদি দৰমহাখিনি যদি শ্ৰমিকৰ দিয়া নহয় তেনেহ'লে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে পিক লাইনটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। আগন্তুক দিনত আমি খালি পিক লাইন বুলি নহয়, আমাৰ নামনি অসমৰ প্ৰত্যেকখন কণ্ট্ৰেক্সুৱেলৰ আণ্ডাৰত যিখিনি শ্ৰমিক কাম কৰি আছে সেই শ্ৰমিকৰ হৈ আমি সকলো সময় মাত মাতি আছোঁ আৰু মাত মাতি যাম। আৰু সকলো কণ্ট্ৰেক্টৰক আমি ক'ব খোজোঁ আপোনালোকে এই শ্ৰমিকখিনিক সময়মতে দৰমহাখিনি দি যাতে সিহঁতক সহায় কৰে। এইখিনি কথা हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को सैलरी टाइम पे नहीं होता है। जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इतना साल से कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं, कभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है। काम भी करते हैं तो उसमें भी पकड़ लीजिए बहुत दिक्कत आता है। सामान भी सही से टाइम पे नहीं मिलता है। सामान के लिए हल्ला चिल्ला करना पड़ता है। तब इतना बोलने के बाद में अगर कुछ नहीं मिलता क्या करें? हम लोग का फैमिली भी है, बच्चा है। 2 महीना 3 महीना अगर हो जाएगा सैलरी देने में तो हम लोग कैसे चलेंगे? किसी दुकान में आदमी कोई राशन खाता है तो टाइम पे उसको पैसा देना पड़ता है। वो तो नहीं समझेगा ना कि 2 महीना 3 महीना हुआ कि नहीं, 10 आदमी का सामने बेइज्जत कर देता है। तो ये चीज़ तो ये लोग तो मालिक आदमी तो नहीं समझता है। उन लोगों को तो टाइम होने से हम लोग को सैलरी चाहिए। महीना कब लगता है? जब 30 तारीख 31 तारीख जब महीना लगता है, हम लोग वो नहीं बोलते हैं 33-31 को महीना लग जाता है। हम लोग को 1 सप्ताह 10 दिन देरी करके भी देगा तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ 10 दिन तो क्या, यहाँ 20 दिन 22 दिन 28 दिन हो जा रहा है। तो इसे करके कौन बर्दाश्त करेगा? कैसे करके काम करेंगे? मेडिकल फैसिलिटी हम लोग का तो यहाँ से पीएफ का पैसा किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ से नंबर तो है ही नहीं किसी के पास, कुछ भी नहीं है सब। इसलिए हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट के हिसाब से जो हम लोग का सैलरी आता है हम लोग को उतना मिलना चाहिए। बस हम लोग को सारा फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के रूल से आता है हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग बस यही। और हम लोग का আজি 5-6 মাহ আমি পিএফ বন্ধ হৈ আছে। কিহৰ কাৰণে আমাৰ পিএফ বন্ধ হৈ আছে? আমি হ'ল দুখীয়া মানুহ, আমাৰ যদি পেটত লাঠি মাৰে এতিয়াতো বেয়া কথা না। তো আমি বিচাৰোঁ আমাৰ পিএফটা যেন সদায় ইকুৱেল সময়ভাৱে দিয়ে আৰু চেলাৰিটো বঢ়াই দিব লাগে। সোনকালে অতি সোনকালে চেলাৰিটো বঢ়াব লাগে।